Good afternoon. So today we'll do chapter 5, Stochastic Model of Investment Returns. Okay. And then, so question 1, the annual rates of return from a particular investment A, are independently and identically distributed. Each year the distribution of 1 plus I. Preeti, do you have a question? You raised your hand. The annual rate of return from a particular investment A, are independently and identically distributed. Each year the distribution of 1 plus IT, where IT is the rate of interest earned in year T, is log normal with parameters mu and sigma square. The mean and standard deviation of IT are 0.6 and 0.06 and 0.03 respectively. Calculate mu and sigma square. So first, Control N, I'm increasing the font size thoda sa and zooming it. One second, guys. Hello. कहाँ थे हम लोग? So we have to calculate the parameters of log normal distribution, and we have been given that 1 plus IT follows log normal. Okay. So one alt equals to 1 plus I underscore T. I hope सबको आवाज आ रहा है. 1 plus IT follows log normal mu comma backslash sigma square. Okay. So given this is there, expectation of IT is given to us. That expectation of IT is equal to 0.06 squared, which implies देख लो backslash right arrow space will give me implies. Backslash right arrow will give me implies. So expectation of 1 plus I underscore T is equals to 1.06, and similarly variance of I underscore T is equals to 0.03 square, which implies variance of 1 plus I underscore T is equals to 0.03 square. यहाँ तक clear है सबको? Any doubts till here? Yes, I'll repeat the implies part. Backslash capital R right arrow. Capital R right arrow and space will give me implies. Moving on, then using the tables, we know that e to the power mu plus half sigma square
space is equal to this value now 1.06, and uh, variance is e to the power 2 backslash mu plus sigma square into, you just don't have to give equal, into e to the power sigma square minus 1 is equal to 0.03 square. Solving the two equations, this is 1.06 square into e to the power sigma square minus the entire thing is this. So therefore sigma is equal to, you need to calculate sigma square, not sigma. Sigma square is equal to 0.0000800676. Okay, and then substituting this in equation 1, we get mu is equal to 0.0578686. Please keep on telling me when you all are done. Okay. So first question was to calculate mu and sigma square. This is done. Question 2 is the annual yields from a fund are independently and identically distributed. Each year, the distribution of 1 plus I is log normal with parameters mu and sigma square equal to 0.004, where I denotes the annual yield on the fund. Calculate the expected accumulation in 20 years time of an annual investment in fund of 5,000 at the beginning of the next 20 years. So we have to calculate the accumulated value, expected accumulation after in the beginning of each of the next 20 years. So first control enter brings you to the new page. Question 2. We've been given that 1 plus I underscore t, or 1 plus, you can just write 1 plus I follows log normal 0.05 comma 0.04. This is given in the question, and then we have to calculate expectation first. So expectation of 5,000 A underscore 20. A is the accumulated value. 5,000 is the value of what we are investing. We have to calculate the expected accumulation in 20 years time. Okay, and 5,000 is invested at the beginning of each year. So 5,000 expectation of A underscore 20. So this is basically equals to 5,000. Now see, we write S due 20. We write S due 20. How will you write S due 20? Just see this. S
backslash dd dot, s backslash dd dot, and double space. Please write this together with me. Even if you have not written the previous part, first do this. S backslash dd dot space space. And then underscore 20 backslash bar double space. Just put 20 inside a bracket. 20 backslash bar double space. Okay. And then space again. So this will come in the subscript, and then you can go from your left arrow key and place a bar. Please do this. More easier way of doing this is saving this equation. So S dd dot space space underscore n backslash bar space 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 left arrow key and then one prime sign. Now please save this equation. Save as new equation. You can give accumulated value. In category you can give my actuarial category, which is already there in my sheet, just not identified. And then insert contents only. Okay, and press OK. To see insert equation in actuarial, coming down, accumulated. The bar is only coming over 0 and not. Shreyansh, I showed you that for getting in both zeros, you need to put 20 in brackets. S dd dot under space underscore. Mahima, I'll repeat that again. Underscore 20 space, 20 backslash bar double space space and then left arrow key and this. महिमा लास्ट लाइन पार्ट का कौन सा पार्ट रिपीट करना है मेरे को? ये वाला पूरा रिपीट करूं कि सिर्फ SDU20? Understood. Okay. Save this equation. Once you have saved this, go to File, Options, Customize ribbon, Customize. In Customize, go to last value, which is building blocks. In building blocks, please go to your accumulated value, which is in A. So see, this is accumulated value. Now I set this shortcut to say Control-Shift-S. Okay. And then assign it. Once you assign it, it will come in your current keys. Close. Okay. And now whenever I press C, if whenever I remove this and press Control-Shift-S, SN appears. And now I have to only change N. Just change N from this. Highlight this, backspace N. Okay. Aditi, saving वाला part. Okay, I'll save again. यहाँ पे लिख लिया ना SDUN लिखने के बाद ये वाले एरो में क्लिक करना, सेव एज न्यू इक्वेशन, नेम योर इक्वेशन, accumulated वैल्यू वाला जो चाहिए, सबके लिए वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? नेहा इंटरनेट स्लो है तुम्हारा फिर. देन इन योर कैटेगरी सिलेक्ट एक्चुअरियल, क्रिएट न्यू कैटेगरी करके अदिति बना लो, सेव इन, और यहाँ पे ऑप्शन है मैंडेटरीली इंसर्ट कंटेंट्स ओनली करना. ठीक है, ये डिफॉल्ट सेट नहीं होता, वरना कर देते इंसर्ट कंटेंट्स ओनली एंड प्रेस ओके. ओके करने के बाद यू सी यहाँ पे इंसर्ट टैब में आ जाएगा.
लिटिल स्लो, ओके, फिर से शुरू करो. सेव एज न्यू इक्वेशन, नेम accumulated value. ठीक है, गैलरी इक्वेशंस ही रहेगा. कैटेगरी, आई हैव क्रिएटेड अ न्यू कैटेगरी ऑफ एक्चुरियल. सेव इन बिल्डिंग ब्लॉक्स, इंसर्ट कंटेंट्स ओनली. डू दिस, इंसर्ट कंटेंट्स ओनली, एंड देन आई एम वेटिंग. यहां तक करो सब कोई. बिल्डिंग ब्लॉक्स, हाँ इसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स करना है. डन. महिमा अदिति, ओके डन. प्रेस ओके. ओके करने से सेव हो जाएगा. देखो सेव किया हुआ इक्वेशन कहाँ दिखता है? Where does this equation show? Insert tab में जाके equation, see accumulated value यहाँ पे अब आ गया है. Okay, in your insert tab actuarial, I give actuarial purposely because A to Z रहता है. Sorted में सबसे ऊपर में आ जाएगा. And actual accumulated value, once you get this here, go to your file. File के बाद options. Options के बाद customize ribbon. Customize ribbon के बाद customize. Customize के बाद लास्ट में बिल्डिंग ब्लॉक्स. इन दैट यहाँ पे फाइंड, जो भी नेम से तुम लोग किए हो उस नेम को फाइंड कर लो. accumulated value है. So accumulated value. Now if you want to create a new shortcut key, यहाँ पे press this new shortcut key, control shift and whatever key you will remember वो की से तुम लोग सेट कर लो. कंट्रोल शिफ्ट एस, आई रिमेंबर, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट एस कर रही हूँ. असाइन करोगे तभी करंट कीज में आएगा. असाइन नहीं करोगे तो करंट कीज में नहीं आएगा. ठीक है, असाइन, क्लोज, ओके, यहां पे हो जाएगा. अब वेर एवर यू आर इन द शीट, वेर एवर यू प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एस, दिस विल गेट एंटर. जितना बार ये प्रेस करो देखो ये एंटर होते जाएगा. दिस इज अ शॉर्टकट यू हैव क्रिएटेड फॉर योर सेल्फ. फिर से शॉर्टकट वाला रिपीट. महिमा शॉर्टकट टाइप नहीं होगा. शॉर्टकट, हाँ आई विल शो हाउ टू डिलीट शॉर्टकट. एक एक करके आई एम अगेन शोइंग तुम लोग को शॉर्ट. इसका वीडियो शेयर हुआ था ग्रुप पे, कोई भी नहीं देखा है. फिर से दिखा दे रही हूँ. इन अकाउंट एक्सेल में फाइल, ऑप्शंस, ऑप्शंस पे कस्टमाइज रिबन. कस्टमाइज रिबन के बाद कस्टमाइज, इसके बाद बिल्डिंग ब्लॉक्स, कम टू योर अक्यूमुलेटेड वैल्यू. ठीक है, अब जो ओरिजिनल है अगर उसको डिलीट करना है इसके ऊपर क्लिक करो, रिमूव हो जाएगा. प्रेस न्यू शॉर्टकट की, प्रेस लिखा हुआ है, टाइप नहीं लिखा हुआ है. सो कंट्रोल शिफ्ट एस, यू प्रेस इट ऑन योर कीबोर्ड. कंट्रोल शिफ्ट एस, असाइन इट, तो ये करंट कीज में आ जाएगा. क्लोज इट, ओके. Once you are done with this, control shift S. Is this okay now? Aram, your doubt is clear? प्लीज से अभी तो मेरे सामने जैसे भी सेव कर रहे हो वैसे सेव कर लो. घर पे सब डिलीट करके आफ्टर क्लासेस आर ओवर या फिर जैसे जैसे चैप्टर कर रहे हो मेक योर ओन शॉर्टकट्स और उसका लिस्ट बना लेना कि क्या शॉर्टकट्स बना रहे हो. डू नॉट यूज द वेरी कॉमन शॉर्टकट्स व्हिच वी यूज इन वर्ड, लाइक कॉपी, कंट्रोल सी मत देना.
सो फिर कॉपी होना बंद हो जाएगा. कंट्रोल सी दोगे तो वो जो भी शॉर्टकट जिस भी इक्वेशन को असाइन करोगे वो आते जाएगा इंस्टेड ऑफ कंट्रोल सी. Okay, don't use the regular shortcuts which will be using like control equals to या control shift equals to या control C V B I ये सब मत यूज करना. ठीक है, जो भी नहीं यूज करते उसको यूज करना, बट इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम कंट्रोल. कंट्रोल के बिना स्टार्ट नहीं होगा. ठीक है, कहाँ थे हम लोग? वी हैड टू फाइंड द अक्यूमुलेशन. या ये सब हो गया. 5000 एस ड्यू 20 निकालना है एट द रेट J%. सो यहाँ पे लिख लो एट द रेट J%, where J is equals to expectation of I. Using the tables, expectation of 1 plus I is equal to e to the power backslash of mu plus half. देख लो फिर बोलोगे मेरे को, एक बार देख लो. 1/2 स्पेस बैकस्लैश सिग्मा स्क्वायर. ठीक है, बिना स्पेस दिए सिग्मा लिखना मत शुरू कर देना, फिर वो सिग्मा स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा. ब्रैकेट्स क्लोज, स्पेस is equal to e to the power 0.05 plus 1/2 bracket space 0.004 ब्रैकेट्स क्लोज स्पेस. इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.50533,757, which implies J is equals to expectation of I is equals to 0.0533757. देख लो यहाँ तक करो सब कुछ. Done. Others? Done. Deepika also same. बाकी लोग कर रहे हैं. Next part. Calculate the probability that the accumulation of a single investment of 1 made now will be greater
then its expected value in 20 years time. बोला सिंगल इन्वेस्टमेंट ऑफ $1 का करेंगे तो उसका वैल्यू ज्यादा होगा देन its expected value in 20 years time. So part 2 is equal to expectation of s underscore 20, ठीक है, is equal to 1 plus j whole to the power 20. 1 रुपी का इन्वेस्टमेंट है तो कोई मल्टीप्लाई और है नहीं. 0.533757 to the power 20, which will be equal to something of 2.829217. ठीक है. And using the information given in the question, हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि s underscore 20 follows log normal of 20 mu backslash 20 sigma square. Okay. This means log normal of 20 into 0.05 comma 20 into 0.04. Okay, that is log normal of 10 comma 0.08. Therefore required probability is probability of S20 greater than 2.829217 is equal to probability of ln of s underscore 20 is greater than ln of 2.829217, which is equals to probability of z greater than brackets में देना ln of 2.829217 1 second, yeah, to like is 2.829217 minus 1 brackets close sqrt of 0.08 space. Something is going wrong. मेरा italics में change हो गया. रुको मेरे को उसको change करने दो. ln minus 1. One second, guys. My cursor is... My word is giving problem.
आदिति मेरा डॉक्यूमेंट ही हैंग कर गया वर्ड का माय क्वेश्चन शीट इज आल्सो हैंग मेरा बहुत कम ही आया आई नीड टू हैव तुम लोग का हो गया तो आई एम नॉट राइटिंग द एंटायर थिंग अगेन just writing on the probability part probability s underscore 20 is greater than 2.829217 is equals to probability of ln of s20 underscore 20 is greater than ln of 2.82217 is equals to or equals to probability of z greater than ln of 2.829217 minus 1 divided by backslash of sqrt of 0.08 space अब आ गया देखो sqrt which is this or equals to probability of z greater than 1.04 minus 1 divided by backslash of sqrt of 0.08 brackets close which is equal to probability z greater than 0.142 142 14142 result equals to 1 minus backslash capital 5 PHI is the capital 5 of 0.14142 you all can skip steps in between मैं सारा steps दिखा रही हूँ ठीक है 0.44377 यहाँ तक हो गया सबका sigma will be 0.08 ही होगा प्रीति नॉट 0.8 20 into 0.004 है others are you all done double arrow means implies sign के लिए backslash right arrow capital R implies sign okay next question 3 a life insurance company is issuing a single premium policy which will pay out 20,000 in 20 years time the interest rate the company will earn
over the first 10 years of the policy will be 4% with the probability of 0.3 and 6% with the probability of 0.7. Over the second 10 years, the interest rate earned will be 5% per annum with probability of 0.5 and 6% with probability of 0.5. Calculate the premium that the company would charge if it calculates the premium using the expected annual rate of interest in each 10-year period. So you have to calculate the expectation for both of the I's and then use it as premium. So control enter question 3. Expectation of I underscore 1 is equals to 4% into 0.3 plus 6% into 0.7, which is equal to 5.4%, and alt equal to expectation of I underscore 2 space is equals to 5% into 0.5 plus 6% into 0.5. So which is equal to 5.5%. Let P denote the single premium. Therefore, P into 1.054 to the power 10 and into 1.055 to the power 10 is equal to 20,000. That is what is said in our question, that it will pay out 20,000. So on solving this, we get the value of P is equal to 6919.89. $6919.89. Done. Okay. Then part 2. Calculate the expected profit to the company if the premium is calculated as in 1. The rate of interest for the second 10-year period is independent of the first 10 years. So you have to calculate the expected profit to the company. So what are the possible outcomes? First we need to take out. I'll draw a table for that. Or you can, if you do not want to draw a table, you can just do directly also. Just take arbitrary number of rows and columns. So for interest rates, accumulated value, profit, and probability. Okay. So I1 is equals to 0.04 and I2 is equals to 0.05. If these are the two cases, then accumulated value will be equal to 6919.89 into 1.04 to the power 10 into 1.05 to the power 10. Then profit is equals to, just calculate, and this value, this is equals to 16684.98. Then profit will be obviously minus 3315.02. Therefore probability of this is 0.3 is for the first interest rate and 0.5 is for the second interest rate. So 0.15. Now just copy
Just copy this line and make the changes. For I1, now we have taken the value of 0.04 and I2 is 0.06. So just make the necessary changes. Do not write the entire thing every time. 18343.88. Here also there's a loss. So 1656.12, and here now it will be same thing, 0.3 into 0.5. Coming down, paste this again. Now I2, I1 will become now 0.06 and this will remain as 0.05. This will be 0.06 and this will change 2018.06.03 and change this to profit 186.03. Now this has a probability of 0.7 into this, so 0.35, and now copy this again. I1 is equal to 0.06, I2 is equals to 0.06, so 1.06, 1.06, so that is 2193.02, sorry, 2219, and then here you get 93.02. There is therefore a probability of 0.35 remains here. Do this table. Again, you all can skip this step which I am doing. You all can just do it directly in the table, multiplying the profit with this and writing in your answer. I am just doing it for my sake, so that if there is anything new, you all will see. कुछ देखना है तो बताना मेरे को. Done. Okay. Others? Done. Okay. Write the parts to this question. I couldn't complete typing, right? Explain why
it is continued. This is a continuation of this question only. Okay. Explain why, despite the company, explain why, despite the company using the expected rate of interest, स्क्रीन पे है नेहा, आई एम राइटिंग इट. थर्ड पार्ट करना, एक्सप्लेन व्हाई डिस्पाइट द कंपनी is using the expected rate of interest to calculate the premium in there is a positive expected profit, and then we have to find the range of the profit. So first third part dekh lo. For third part, expectation of 1 plus I underscore 1 to the power 10 is equal to expectation of into expectation of 1 plus I underscore 2 to the power 10 brackets close is not equal to backslash any is not equal to 1 plus expectation of I underscore 1 brackets close to the power 10 and 1 plus expectation of I underscore 2 brackets close to the power 10. Okay. The expected profit is positive because there is a fairly high chance that the interest rate is actually earned in first 10 years is greater. Alt equal to backslash any. Alt equal to backslash any space. Slash equals to देने से भी वो not equals to बन जाता है. Slash equals to also becomes not equal to. Slash greater than sign, not greater than. Slash less than sign, not less than.
दिस इज जस्ट थ्योरी, आई एम टाइपिंग तुम लोग का ताकि आंसर कंप्लीट हो जाए, ठीक है. एंड पार्ट 4 they've said to calculate by considering each outcome find the range of possible profits. Considering each outcome in part 2 हम लोग को possible profits निकालना है to the company. So that we had each outcome in part 2 हम लोग जो निकाले, तो हम लोग का part 2 का तो आंसर्स आया हुआ है, प्रॉफिट भी आया हुआ है, प्रोबेबिलिटी भी आया हुआ है. सो वी हैव टू जस्ट कैलकुलेट एसडी. सो एसडी निकालने के लिए वी नीड एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट का स्क्वायर. आई हैव नॉट एंटर्ड इक्वेशन मोड इसलिए वो ऐसे आ रहे हैं, ठीक है. अब देखो, आई जस्ट कॉपी दिस इक्वेशन फ्रॉम योर. यहाँ पे कॉपी करके रखा है, प्रॉफिट्स को स्क्वायर कर दो. Just square the profits and you get your answer to be 3755.194. So therefore SD is equal to backslash SQRT of 3755.194 minus 87 square brackets close space, which is equals to 1935.88. Square root सब ठीक से लिखो. It should come exactly like this. Deepika, are you there in class? तुम्हारा एक डाउट था, just clear that. You had written this, right? Alt equal to U double dash W is equal to -1 divided by W square. ये ऊपर नहीं जा रहा था ना, राइट? क्यों नहीं जाएगा? जब भी स्पेस ये वाला देते ना, दिस ओपन्स दिस, सिंगल सिंगल करके 2 प्राइम्स देना, स्पेस का देखो ऊपर चला जाएगा. सिंगल सिंगल करके 2 प्राइम्स दोगे तो ऊपर जाएगा, डबल एक बार में दोगे तो ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि वो टेक्स्ट में बदल देता है इसको, फिर वो मैथमेटिकल नहीं रहता. जैसे आर में होता है ना, अपॉस्ट्रोफी खोलने के बाद होता है, सेम थिंग यहाँ पे भी होता है. ठीक है? हाँ हाँ ठीक है. Anybody else has any doubts still here? Done? Shreya? ये एक बार 4th वाला का क्वेश्चन दिखाइए ना. हाँ दिखा रही हूँ, ये रहा.
By considering each outcome in part 2, find the range of profits and calculate the SD of the profit. हम लोग का possible profits तो पहले ही हम लोग निकाल लिए थे, तो वो वहीं पे है. We just need to calculate SD. हो गया दी. ठीक है. बाकी किसी का कोई डाउट है यहाँ तक? Almost all types of sums have been covered. Probability, profits wala, interest rates, different wala, mean variance has been covered. There is no different question in this chapter as such anymore. Okay. Please study portfolio theory for Wednesday's class. Wednesday को portfolio theory होगा. Yeah, class over. Okay, Aditi. Class is over now. No more questions from this chapter. हाँ बोलो. एक बार टेबल Table. शो करिए. ये वाला table. हाँ ठीक है. हाँ, एक सेकेंड. हाँ हाँ ओके. हो गया दी. हो गया. और किसी को कोई हाँ. डाउट नहीं है? ओके देन.